up your neural system. So this neural system is going to be made up of three things: brain, spinal cord, and nerves. It is made up of specialized cells known as neurons. तो न्यूरल सिस्टम के सेल्स है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. करेक्ट. तो in the diagram also you can very well see the brain, the spinal cord and the nerves which are originating. Correct. बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा. This is the brain, this is going to be the spinal cord, and these are the nerves which are originating. Look at the dense network of the nerves. Then, what exactly are neurons? I know there's a chapter called as सेल्फ के बारे में हमें पूरा डिटेलिंग करना है. That is animal tissues, and in that we'll be studying more in detail about the neural cells. But for us to understand what is a nervous system, we have to understand what is a neuron. So a neuron is nothing but it's also called as the nerve cell. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. It's the structural and functional. So it has got three main parts. First, cell body, dendron, and axon. Okay. Is this chapter hard? Every chapter is hard if you don't understand it, and every chapter is easy once you understand it. So hard करके कुछ नहीं होता है बेटा, easy करके कुछ नहीं होता है. It purely depends upon your understanding and your revisions. Okay. Animal wala, as I say, my answer remains same. Every chapter is difficult unless and until you don't understand it, and every chapter is easy once you understand it. Okay, nothing is difficult in this world. Let it be bio, let it be physics, let it be chemistry, let it be English, let it be anything. When you understand, it becomes easy. Correct? Wait, so the three main parts are the cell body. Of course. Yes, Jaya. So the three main parts are the cell body, which will be called as the cyton. Second would be the dendron, and third would be the axon. These three parts together makes up one neuron. Okay. Several such neurons will make up the neural system. ठीक है. तो जो cells है, nerve cells है, जो neurons है, वो किसके बने होते हैं बेटा? Cell body, dendron, axon. Let us understand all of these. ये देखो, this is a network of neurons. ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, there are so many neurons which are interconnected to form a network. Okay, so with this network only we are able to coordinate the things, understand the things, right? सिंपल चीज बताऊं क्या आपको? सिंपल वाली चीज, अभी दिवाली के टाइम पे आप लोग ने लाइटिंग किया होगा, है ना? लाइटिंग करते हैं ना हम लोग विंडोज पेन पे. यस. सो वहां पर है ना, बहुत बार नाउअडेज यू गेट दोस लाइटिंग में ना, यू गेट दोस स्मॉल लाइट्स के ऐसे लॉन्ग ऐसे ये मिलते हैं, तोरण बोलते हैं हम लोग उसको, हाँ, एलईडी के. यस, या बंडल्स, पूरा ऐसा एक एक पूरी ऐसी चादर भी होती है, पूरे नेट, राइट? अब कभी कभी क्या होता है ना, वन ऑफ द बल्ब्स का फ्यूज चला जाता है. इट विल नॉट ब्लिंक but rest will blink. But what has happened, because there is some problem with the connection with the one of the bulbs, probably वो पूरी line उसकी चली जाती है. So first and third line is working, but probably the second line, the middle line जो है, उसका सारा का सारा fuse चला गया. It's not in the working condition. Correct? So in fact our neurons are just like these bulbs. They are small integrated entities, and one of them will start, उसका फ्यूज आउट हो जाता है. मतलब क्या? इट विल गेट कंप्लीटली यूज्ड अप, डिस्ट्रॉय. वंस वी एज, जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है बेटा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग if we don't take care of it. Okay, and do you know the thumb rule that the neurons are not in the capacity to undergo mitosis? Neurons cannot increase in number.
okay, they remain fixed. So हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? What is our motto? What is our concern? We have to take care of our neurons, okay, because they cannot undergo mitosis. Your rest of the body cells are in the capacity to undergo mitosis, so they do not have a problem. They can be replenished again and again, but your neurons cannot. Yes, yes, Vaishnavi. Very good, beta. Yes, 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 Krishna. So that was the thing I had told you all long before, that you should eat walnuts and almonds to take care of the neuroglial cells which are surrounding your neurons. Correct? So those neuroglial cells, yes, the neuroglial cells are the cells which are going to be nutritive in nature. Exactly. They are going to be nutritive in nature, which will be surrounding these neurons. But these neurons are the structural and functional unit of the nervous system. Okay? समझ में आ रही है बात मेरी? तो this is how our nervous system is going to be completely controlled. Let us understand each of these in detail. See, let us first understand what is a cytosol. So here you can very well see the entire structure of the neuron. This is the entire structure of the neuron. Cell body or the cytosol, it contains cytoplasm, cell organelles and Nissls granules called as the granular bodies. So ye dekho beta, you can see this over here very nicely. Yeah. Yes, Krishna, you're right beta. I had told that only. Taking care of the neuroglial cells is our motto. Yeah, see. Now in this diagram, you can very well see this part. Ye palm region jo hai apna. You can see the palm very clearly. You can see my palm also, right? So in this same way, this palm region, ye wala jo hai, this is going to be called as the cytosol. Okay. Now here you can see small red color के granules. ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक. So these red granules are going to be called as Nissls granules. Okay, what is the function of it? आगे आएगा. Okay, these are going to be called as the Nissls granules. If you look at this, the Nissls granules are concentrated only in this region and they do not extend in this region. कहीं पर भी आपको Nissls granules नहीं दिखाई देंगे इधर. ये region में ही सिर्फ आपको दिखाई देते हैं. Okay, so the cell body is only this portion, beta. The cytosol is only this portion, which will have a nucleus, right? Which will have Nissls granules and which will have these extensions. These extensions will be called as dendrites. What we call them as dendrites. Okay, so ये पूरा एक न्यूरॉन है. ये न्यूरॉन का ये जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम कहते हैं cytosol. Where is the cytoplasm? The Nissls granules are swimming in the cytoplasm. ये जो Nissls granules दिखाई दे रहे हैं ना, they are swimming in the cytoplasm. Okay. Any difficulty in understanding the first part of the nerve cell? Let it be present. Let it be present. But I'm talking about this portion. Okay. Fine. Got it? Okay. Look at the second one. Yeah, they are present in the dendrites as well. Only the cytosol wala portion. Okay. Let us see the dendron. Okay. Dendrite alag hai and dendron alag hai. Haan? Dendrite are the branches of dendron. Bataungi main. See. Dendrons, short fibers that project out of the cell body. Sub branches of the dendron are called as dendrites. They transmit impulses towards the cell body. तो ये देखो बेटा, यहाँ पर ये जो है ना, ये डेंड्रॉन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेंड्रॉन्स है. और ये डेंड्रॉन से ये जो ब्रांचेस निकल आए हैं ना, दिस विल बी कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स. ओके. Yeah. Yes, Sanika, very good. Like major calyx and minor calyx, something like that only. Correct. Okay. So these are going to be the dendrons and these are going to be the dendrites. So ये जो है अपना साइटोन है, ये जो है ये अपना डेंड्रॉन है, और ये डेंड्रॉन के आगे ये जो extensions है, those are going to be the dendrites. Clear? Any difficulty in understanding cyton, dendron and dendrite? किसी को कोई कंफ्यूजन है माइंड में?
All of you all are okay with this? Okay. The third thing is going to be the axon. Axon is going to be the tail. Okay, so see, a long fiber which transmits impulses away from the cell body. मतलब किधर पे है ये? You can see this. This entirely over here will be called as axon. Okay, यहाँ तक पूरा ये जो स्टेम है, ये जो टेल है, ये जो स्टॉक है, उसको हम कहते हैं axon. Right? The branching of axon is called as axonite. जैसे ये dendrites है ना, वैसे ये axonites कहते हैं हम लोग इसको, ये जो branches है उनको. Okay, each axonite ends in a bulb-like structure called as synaptic knob. So ये जो axon vesicles का कहते हैं हम लोग इसको, ये देखो, these are the vesicles. It's called as synaptic knobs. So these are the synaptic knobs, right? This is going to be the axon terminal, means ends of the axon. This is going to be the entire axon. So this is the cyton. These are the dendrons. These are the dendrites. This is the axon. This is the axon terminals, which end into vesicles called as synaptic knobs. Entirely understood the structure of one neuron or the single nerve cell कैसे दिखता है? Any difficulty? Any difficulty, beta? Forget about these other words, that is myelin sheath and Schwann cells. उसके बारे में भी मैं आगे बताने वाली हूँ. Don't worry. But as of now, इधर तक समझ में आ गया है? Yes, 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 of course. Okay. So ये जो है, ये जो branches इधर निकल रहे हैं ना, these branches are going to be called as axonites, right? Well, then let us see the types of neurons. What are the different types of neurons? So first we have got something called as multipolar neuron. As the name says, multipolar. Okay, one axon, as you can see in this diagram, multipolar में one axon, correct? Two or more dendrons. तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dendrons दिखाई दे रहे. Two or more dendrons. It's type of a neuron which is predominantly found in the cerebral cortex. तो जो अपना cerebrum होता है, उसके cortical region में ये वाले neurons, multipolar neurons present होते हैं. Okay, got it? Bipolar neuron. One axon and one dendron found in retina of the eye. So eye के जो retinal cells होते हैं ना, उनमें ये वाला न्यूरॉन होता है, बाइपोलर. ओके, यहाँ पर डायग्राम में बाइपोलर नहीं दिखाई दिया है. दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर्स ओनली. सो बाइपोलर का डायग्राम नहीं है इधर राइट साइड में. लेफ्ट साइड में यू कैन सी द डायग्राम. कैन यू सी वन एक्सॉन, करेक्ट, वन डेंड्रॉन, one axon and one dendron. उसको branches नहीं है. It does not have dendrites. It does not have any branching. कुछ नहीं है. Okay, so this is going to be your bipolar. Unipolar, one axon only. यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला डायग्राम. This is the cell body and it has got only one axon. Okay, so having only one axon. ये देखो, one axon only. This is found in the embryonic state. एक बार fetus development complete हो जाता है, then you will not be able to see this unipolar neurons. Multipolar ही predominant है. We all are actually, you know, brain का जो अपना है, that is multipolar. Okay. Receptor, that is the receptor, stimulus receptor. Unipolar, no dendron, no dendron. It is in the developing stage. So therefore axon will be formed, dendron बाद में बनेगा. So unipolar is found only in the embryonic stage. It will eventually become multi also. Okay, fine.
So these are the three types of neurons. Yeah, whole chain, whole chain. The entire tail is going to be the neuron. Yes. Okay. Yeah. Now let us understand the types of axons basically. So ये बहुत ही important वाला part है. इधर सबसे ज़्यादा confusion होता है बच्चों का with respect to these two words. So there are two types of axons basically, myelinated and non-myelinated. Okay. So what do you mean by myelin? Myelin का एक शीथ रहेगा, एक कवरिंग रहेगा एक्सॉन के ऊपर. अगर वो शीथ है तो वी कॉल इट एज माइलिनेटेड. अगर वो शीथ नहीं है तो वी कॉल इट एज non-myelinated. I'll show you what exactly it is. First we talk about the myelinated axon. See, now here it is enveloped with Schwann cells. So here you can see the word Schwann cells. ये दिखाई दे रहा है तुम्हें Schwann cells, right? So जहां जहां ये Schwann cells है वहां वहां ये enveloped part दिखाई देगा. So it is enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. It is found in spinal and the cranial nerves. White colored area formed of myelinated nerve fiber is called as white matter. बेटा इतनी बार आपने शायद 9th में भी ये पढ़ा होगा. If I'm not wrong, ये शायद 9th या 10th का भी syllabus में है. There are so many students who still are not sure what is gray matter and what is white matter. यही पता नहीं है बहुत सारे बच्चों को. So please understand what is white matter. The white colored area formed by or formed of myelinated nerve fiber is called as white matter. So myelin sheath जहाँ जहाँ you can see this word, see myelin sheath. So ये Schwann cell है, Schwann cell के ऊपर ये myelin sheath है. Okay, you can see this in this particular diagram also very well. See, you can see this myelin sheath, correct? See, this is the myelin sheath. Okay, got it? And this is the Schwann cell. ये सारे Schwann cells हैं. और उनके ऊपर एक कवरिंग है, ये कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीथ. तो जिस जिस एक्सॉन में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन. ओके, गॉट इट? द गैप्स, yeah, that is white in color. Yes, the gaps between the two adjacent myelin sheaths are called as nodes of Ranvier. तो यहाँ पर देखो नोड ऑफ Ranvier वर्ड है. सो इन दोनों के बीच में ये एक्सॉन है. दिस इज द एक्सॉन. ये जो रॉड दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द एक्सॉन, राइट? एक्सॉन के ऊपर ये Schwann cells है, Schwann cells के ऊपर ये माइलिन शीथ है और यहाँ पर बीच में गैप्स है. तो ये जो गैप है, ये एक गैप है, ये दूसरी गैप है. These gaps will be called as nodes of Ranvier. So please remember the structure of the myelinated axon. Very important. Got this? Any difficulty in understanding this? Any problem in understanding this? So look at this diagram. बहुत अच्छा diagram है बेटा ये. ये देखो. This is the cell body, right? Dendron ये है और dendrites ये है. ये सेंटर में न्यूक्लियस है. ये यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ, which is going to be covered with the Schwann cells. Schwann cells will be made up of myelin sheath, right? The gap in between, ये जो gaps है बीच में, these gaps will be called as nodes of Ranvier. Why not axonite terminal? It will be shown. It is एक्सोनाइट टर्मिनल बाद में दिखाई देगा. ये और ये हाफ दिखाया है ना, इसीलिए एक्सोनाइट टर्मिनल्स यहाँ पर है. Here, ये देखो एक्सॉन टर्मिनल्स कैन बी सी. ओके, फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज योर myelinated axon. Axon covered with Schwann cells, covered with myelin sheath with gaps called as nodes of, yeah. So it's going to have a gap. Which name to write in boards? Axonite. Axon is this beta. Axon अलग है, axon terminals अलग है. Axon terminals are the ends, and this entire rod-like thing is going to be the axon. Okay. So this rod that you can see, this yellow rod you can see now is the axon. And this axon will branch to form axonites.
एंड दीज एक्सोनाइट्स के एंड्स को हम कहते हैं टर्मिनल्स, and ultimately they will end up into synaptic knobs. Okay, got it? Any difficulty in understanding myelinated axon and what is white matter? In one axon there is only one nucleus. Axon does not have a nucleus. Nucleus is present in the cytosol. So one neuron will have one nucleus. Okay, axon में nucleus नहीं है. Branching of axon is axonite, so the terminal will be called as axon terminal or axonite terminal. Anything is fine. Anything is fine. Okay, both are correct. Well, so that's about your myelinated axon. Then we go to non-myelinated. Here you can see very clearly the non-myelinated. यहाँ पर आपको ना Schwann cells दिखाई दे रहे हैं, ना myelin sheath दिखाई दे रही है. So यहाँ देखो, Schwann cells present but no myelin sheath. So why you can't see the Schwann cells and why you can't see the myelin sheath? Because myelin sheath was forming a covering. Okay, एक उसके ऊपर thick myelinated sheath बना रहा था. अब ये नहीं दिखाई दे रहा है. Therefore you feel Schwann cells are also absent. But see, Schwann cells present but no myelin sheath. The gray colored area without myelin sheath is called as gray matter. So what is gray matter? Non-myelinated axon का जो gray color है उसके वजह से it will be called as gray matter. On the other hand, उसके ऊपर अगर white color का myelin sheath का wrapping आ गया, then it will be called as white matter. Okay? Sheath was present only on Schwann cells or in the nodes of, no, not in the Schwann, not in the nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier पे कुछ नहीं है. It's a gap, as we say. Okay, got it? So see, if you look at this picture, here you can see the cell body or the cytosol. Here you can see the nucleus, dendron, dendrites. Here you can see the axon in continuity. Can you see this axon in continuity? अब ये axon के जो cells है ना, ये axon के cells को ही हम कहते हैं Schwann cells. लेकिन ये Schwann cells के ऊपर कोई भी myelin sheath का bundling नहीं है. Correct? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? Non-myelinated axons. Understood? See, nowadays now, girls would be knowing this better. Nowadays we get bangles, okay, जिसके ऊपर है ना thread wound होता है. देखा है आपने? Have you all ever seen those type of bangles? Probably मेरे अलमारी में पड़े रहेंगे ऐसे bangles. So it's a plastic का या metal का bangle और उसके ऊपर है ना ऐसे thread tie किया जाता है. देखा है आपने? Have you all seen? हाँ. So exactly like that बेटा. The metal remains metal only. Okay? और उसके ऊपर जो colorful मतलब thread tie किया जाता है ना, that matches your dress or your sari or whatever. Yes, yes, yes बेटा, yes Vinny. The thread is looped over the metal. Yes. इसे पूरा उसको ऐसे wound करेगा उसके ऊपर. Correct. Right? So that is like, you know, the color will change. Now, if you are wearing a yellow dress, you can select the bangle which is having a threaded yellow color. Okay? येलो कलर का थ्रेड है. रेड कलर का ड्रेस पहन रहे हो तो रेड कलर का थ्रेड वाला बैंगल तुम चूज कर सकते हो. So that color is going to be because of what? The thread wound over it. Otherwise, what is the color of the metal? It's a normal metal. Correct? Right? So in the same way, when there is going to be myelin sheath ka surrounding in that particular area, it will appear white in color. Otherwise, it's going to be gray in color. Okay? So wherever there is no wrapping of the myelin sheath, the color will appear gray. Wherever there is wrapping, it will appear white. Now you all have understood what exactly is it. समझ में आ गई बात मेरी जो मैं कहना चाहती हूँ वो? हाँ? Okay. So if you can look at this. This is also a very good example. ये देखो. Can you all see this thread in between? राइट? अभी इसके ऊपर अगर मैंने ये बीड्स डाल दिए तो अब थ्रेड दिखाई दे रहा है क्या आपको? कैन यू सी द थ्रेड नाउ? नो.
Why can't you see the thread? Because these brown color के beads अभी इसके ऊपर आ गए हैं. Something like that. Okay, it's something like that. So this is how our myelinated and non-myelinated axons are going to look like. So that is the thing that they are saying about the gray matter and the white matter. Look at this beta. यहाँ पर उन्होंने gray matter बोला है. Means यहाँ पर non-myelinated axons है, जहाँ जहाँ gray matter लिखा है वो. और यहाँ पर उन्होंने व्हाइट मैटर बोला है, मतलब यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे है, दे आर मेड अप ऑफ माइलिनेटेड शीथ. So presence or absence of Schwann cells will not determine myelinated or non-myelinated. Presence and absence of myelin sheath will determine myelinated or non-myelinated. Is it clear? Cyton and axon. I know. Exactly. So basically it's going to be the presence of myelin sheath and absence of myelin sheath that will decide the color. Okay. Where is this found? This particular one is found in the autonomous and somatic neural systems. ये जो non-myelinated होता है वो autonomous system में मिलता है. Okay, what is autonomous आगे बताऊंगी, don't worry. Then look at this. Outer layer is non-myelinated, inner layer is myelinated. Yes. So it is dependent on which type of axon is present in that area. Okay. Well, now we come to one of the most important and most, exam point of view predominantly asked question wala part, that is generation and conduction of nerve impulses. तो हमने देखे ये नर्व के न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, नर्व सेल्स कैसे होते हैं. अब ये नर्व सेल्स एक सेल से दूसरे सेल के तरफ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो हाउ द सिग्नल और द स्टिमुलस इज गोइंग टू पास ऑन is something we have to understand. So it's very important. It's most crucial part of this particular, chapter, that is generation and conduction of nerve impulses. Okay. Before I go ahead with the nerve impulses, anyone having any difficulty till whatever we have done till now? हमने जितने भी अभी तक देखे हैं स्लाइड्स, उसमें से किसी में भी कोई डिफिकल्टी है क्या? देखो एक बार. Understood. See you. First, generation and conduction of nerve impulses includes 3 steps. So 3 steps of impulse transmission. First, maintenance of resting membrane potential. Second, action potential. And third, propagation of the action potential. इसका मतलब क्या हो जाता है? सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ पहले. हैव यू ऑल सीन काम वाटर? एकदम शांत लेक, पॉन्ड, ऐसा कभी देखा है बेटा आपने? हैव यू ऑल एवर सीन वेरी काम वाटर, प्योर काम वाटर? नहीं देखा है तो एक ग्लास ले लो, उसमें पानी भर लेना. हाँ, उस पानी को एट रेस्ट रख दो. ठीक है. अब क्या होता है, वो एट रेस्ट जैसे ही आ जाएगा, यू वोंट सी एनी मूवमेंट इन दैट वाटर. ट्राई टू पुट अ स्मॉल पेबल इन दैट वाटर. व्हाट विल हैपन? What will happen when you put a small pebble in that water? क्या होगा? या पॉन्ड है, शांत है, उसमें अगर तुमने, हाँ, yes, ripples are going to be caused. Exactly, yes, concentric circles, ऐसे ripples आ जाते हैं उसमें. Correct? अब एक particular ripple आ गया, understood? तुरंत उसके बाद एक concentrically ये ripples बढ़ते जाते हैं. Correct? So this is called as propagation. This is called as propagation. So पहले तो maintain करना है calm water, correct?
उसके बाद उसमें हमें एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करना है, मतलब we have to stimulate the movement of that particular water by adding something, and when that action potential is initiated, it will be propagated, it will be conducted. Correct? In the same way, our stimulus is going to be conducted for a particular action to occur. Now, what actions are occurring? Any action, anything that is like you're analyzing and you're working on that. It could be movement of your, you know, entire body, or it could be movement of your eye, or it could be movement of your tongue, or it could be a mosquito sitting on your hand, or it could be something that you're seeing, that you're visualizing, something that you are imagining. Everything are going to be your actions. So how is this particular thing happening in our body? What is the role of these neurons? How this impulse is conducted is something that we have to understand in this particular part. Yes, exactly. Okay. So let us start with the first step of the impulse transmission, that is maintenance of resting membrane potential. तो सबसे पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमें मेंटेन रखना है, रेस्टिंग मोड में रखना है। जब वो सबसे शांत रहेगा तभी उसको थोड़ा सा भी अगर कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है तो तुरंत रिपल्स आ जाएंगे। Okay, you try to put a pebble in the running river water, what would happen? Nothing. It's not going to cause any ripples, rather it will flow along with that water flow. Correct? So important point kya hai for the ripples to cause? Calmness. So that is going to be happening, which is going to be the first point, that is maintenance of the resting membrane potential. Okay, so let us understand how this is going to be maintained. Yes, now a very important part, a part of your NCERT, yet many students get confused. I don't want you all to get confused. Please pay very good attention to every word that I'm saying. It's easy. It's simply easy. Understand the concept very nicely, then read the language, you will understand. Okay, see. First, maintenance of resting membrane potential. Neural membrane. Neural membranes means what, beta? The plasma membrane of our neuron. Correct? Right? So the neural membrane contains various selectively permeable ion channels. Now we have already seen in cell unit of life the structure of the cell membrane. And in that we also know that there are several proteins which act as channels, tunnels for the movement of different substances. Okay. So here in the neural membrane also, we have got various selectively permeable ion channels. So these tunnels, these channels will allow only the peculiar ions to move, IONS, ions to move across it. Okay. In a resting neuron, that is neuron not conducting any impulse. So when the neuron is not conducting any impulse, what we call it as resting neuron. Okay. So the resting neuron, in the resting neuron, the axonal membrane. Axonal membrane means what? The plasma membrane of the axon. What is axonal membrane? Plasma membrane of the axon. Okay. So we are not talking about the cytosol. What are we talking about? We're talking about the axon. Okay. So in a resting neuron, the axonal membrane is more permeable to K plus ions and nearly impermeable to Na plus ions. इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर Na प्लस भी खड़ा है, K प्लस भी खड़ा है. हाँ, तो ये जो चैनल्स है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है. So when the membrane is in the resting mode, it will almost not allow Na plus to enter inside the cytoplasm of the axon, जिसको हम एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं. ओके, समझ लो बेटा, इसको अच्छी तरह से समझ लो. ठीक है, देखो आपके डोर पे 10 लोग खड़े हैं.
ठीक है, out of these 10 people 5 are Na plus, 5 are K plus, for example. Okay, you are at home, you open the door, bell baja तो आपने door खोला, and now you tell Na plus not to come in, only K plus to come in. Did you understand? So Na plus and K plus both are waiting outside the axon and both want to enter inside the axon, right? But axon का ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है? वो बोलता है no entry to Na plus, only K plus will enter. So it is more permeable for whom? It is more permeable for K plus to come inside and almost not permeable to Na plus. Did you all understand this? Right? Also, the membrane is impermeable to negatively charged proteins in the exoplasm. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, हाँ, उसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है. सो ये प्रोटीन्स बाहर जाना चाहते हैं, नॉट अलाउड. सो no proteins are allowed to move out, no Na plus is allowed to move in. Did you all understand what is happening? So look at this diagram, my dears, please. In this diagram you can see the positively charged ions present over here. See, Na is also plus and K is also plus, correct? सोडियम आयंस पे भी पॉजिटिव होता है एंड ये अपना पोटेशियम भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए बाहर की तरफ सारे पॉजिटिव ही है. कैन यू सी दिस? ऑल पॉजिटिव. दीज आर दी आयन चैनल्स जिसके थ्रू K प्लस अंदर आ रहा है. ये नेगेटिव साइन दिखाई दे रही है बेटा आपको. कैन यू ऑल सी दिस नेगेटिव साइन? इनसाइड द एक्सोप्लाज्म यू कैन सी दिस नेगेटिव साइन. So this negative sign represents your negatively charged proteins. Okay, so the membrane is impermeable to negatively charged proteins in the exoplasm. Impermeable, so these proteins will never be allowed to move out. समझ में आ गया? So because of this particular negatively charged protein, what would be the overall charge of the exoplasm? Will it be positive? Will it be negative? Tell me. बताओ मुझे. एक्सोप्लाज्म का चार्ज नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? Yes, very good. Of course, it's going to be. Hey, exoplasm. Exoplasm के बाहर नहीं पूछा है. I'm asking within the exoplasm. Yes, Krishna, you're right. You're right. So this is yes, Hirisha, correct बेटा. नहीं चार्ज होता है ना, नो चार्ज कैसे? You can see negative sign over here, right? So it's going to be more negative. I would say it's going to be more negative. Got it? Got it? Yes. So ये वाला point सबको एकदम perfectly समझ में आया है. When there is resting membrane, that means it is not conducting any impulse. At that time, there is going to be more positive charge outside, more negative charge inside. Why there is more positive charge outside? Because Na plus K plus both are waiting outside, while negatively charged proteins are present inside this exoplasm. Now K plus wants to come in, which will be allowed to come in. Na plus also wants to come in, which will not be allowed to come in. Okay, I'll tell you why it is not allowed. I'll tell you why it is not. आगे समझेगा why Na plus is stopped from entering. आगे समझेगा बेटा. Negative, no more negative. Yeah, that's what I said. It is not equal. It can never be equal. Negative charges and positive charges कभी भी equal नहीं होंगे. जिस दिन equal हो गए उस दिन तुम्हारा ये काम करना बंद करेगा. It should never reach equilibrium. Otherwise, the stimulus will not be passed on only. Okay, got it? It can never be zero charge. ठीक है? So any difficulty in understanding up till here? All of you, first part समझ में आया? Resting potential में क्या होता है? So here you can see this is your Na plus and K plus. ये pump है Na plus K plus का.
आउटसाइड, इनसाइड, ये एक्सोप्लाज्म है अंदर की तरफ, ये चैनल है, ओके, जहां से अंदर बाहर चीज जा आ सकती है. फाइन. So this is what is very important for you all to understand what is happening in maintaining the resting potential. Okay. Now see what is happening next. Therefore, concentration of K plus and negatively charged proteins in the exoplasm is high. K plus अंदर आने को allow किया, and negatively charged proteins तो impermeable है, they are not allowed to move out, so they are always there within the exoplasm. So what is happening? See, thus the concentration of K plus and negatively charged proteins in the exoplasm is high, while the concentration of Na plus inside the exoplasm is low. बराबर. जिसको तुम अंदर आने दोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जो ऑलरेडी घर में है वो तो है ही. करेक्ट. फाइन. नाउ द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, मतलब किधर, ये अगर एक्सॉन का मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो. सो द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज low concentration of K plus because K plus is moving inside. So बाहर उनका जो भीड़ है वो कम हो गया K plus का, but it has got high Na plus concentration. बराबर. सिंपल चीज है, हाँ या ना. तो अब क्या हो गया बेटा, बाहर Na plus वेटिंग मोड पे है, K plus अंदर आ चुके हैं. करेक्ट. This forms an ionic or concentration gradient across the resting membrane. तो बाहर K plus कम, अंदर K plus ज्यादा, बाहर Na plus ज्यादा, अंदर Na plus कम. ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं दोनों में? एक का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है. So what is it causing? It is causing a concentration gradient across the resting membrane, that is across the एक्सोप्लाज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बराबर है. कोई डिफिकल्टी है ये पॉइंट समझने में? एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी डिफिकल्टी? ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस पर्टिकुलर थिंग? हाँ, देखो इजी है कि नहीं? क्या हमने पढ़ा अभी तक? सी व्हाट इज द सिंपल थिंग दैट आई विल टेल यू अगेन वन मोर टाइम. व्हाट इज इट? दैट द axon, okay, the tail part, okay, that axon is going to be having cytoplasm inside. Correct. This cytoplasm will contain negatively charged proteins. Fine. So there is a net negative charge present inside the exoplasm. This plasma membrane has got ion channels for the transfer of Na plus or K plus, but during the resting potential, resting membrane, K plus will be allowed to move in, but Na plus will not be allowed to move in. So what is happening now? K plus का concentration inside the exoplasm बढ़ गया, right? और बाहर K plus का कम हो गया. Na plus is not allowed to come inside, so Na plus का concentration बाहर ज्यादा हो गया, अंदर कम है. इधर तक कहानी समझ में आई है बेटा? Because this is the base how the stimulus is going to be conducted. It's very, very, very important. Very important. Understood this? Anyone having any problem in understanding this, please let me know. Simple? Wait. Then what happens? See beta, next thing. The ionic gradients are maintained by the active transport of ions by the Na plus K plus pump. मतलब क्या? ये जो gradient है ना, अंदर कम बाहर ज्यादा, बाहर कम अंदर ज्यादा, ये जो Na plus और K plus का gradient है ना, उसको maintain कौन कराता है? The Na plus K plus pump. What are pumps? Pumps are nothing but they are the areas through which specific ions can move across. उसको हम कहते हैं these are proteins. Pumps are nothing but these are proteins.
एंड इस प्रोटीन्स का मेन काम क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस को बैलेंस करते रहो. ओके, सी, सो दिस पंप or this protein transports 3 molecules of Na plus outward for 2K plus into the cell. Give and take policy 3:2 है बेटा, 1:1 नहीं है. एक K plus अंदर आया तो एक Na plus बाहर निकला, ऐसी बात नहीं है. How is it? 3 Na plus outside, 2 K plus inside. Please remember this. This is one of the favorite questions of the examiners. That for every 3 Na plus, how many K plus will move out at one go? Yes. Na comes outside from where? From the exoplasm only. कब आएगा बाहर वो बताऊंगी. I'll tell you. Okay. So what is going to happen? See, Na plus out, K plus in. But when 3 Na plus will move out, that time 2 K plus can come inside. ठीक है? As a result, the outer surface becomes positively charged and inner surface becomes negatively charged. अब यहाँ पर आ गया problem. How can you say negatively charged when K plus is moving inside? Can anyone answer this question? Na plus बाहर आया तो बाहर positively charged condition हो गया. I agree. But K plus अंदर जा रहे हैं ना? 2K plus are going inside ना? Then how can you call it as negatively charged? बोलो. Very good, Vaishnavi. Very good. Very good. हाँ, I agree, Krishna. But why is that negative charge? वही मैं पूछ रही हूँ. Vaishnavi, you're perfectly right, my dear. Very good. Yes, Zui. Yes, Zui. Right, right, right. Very nice. Even you are right. Ah, yes, Krishna. Now you got it. Exactly. See, first thing is already exoplasm में negatively charged protein है. बराबर है? Correct? Understood? Now imagine that there are रैंडम ले रही हूँ मैं. रैंडम मतलब बिल्कुल रैंडम. ये जो है ये फिगर्स कोई मायने नहीं रखता है. जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट में ये बता रही हूँ. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, देर आर 300 मॉलिक्यूल्स. देर आर 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ negatively charged proteins inside the exoplasm. Okay, got it? For that 300 negatively charged, लेके चलो कि 150 Na प्लस अंदर थे. कितने Na प्लस अंदर थे? उसके हाफ, 150 Na प्लस अंदर थे. तो नेगेटिव चार्ज कितना था बेटा? -150 नेगेटिव चार्ज था. बराबर है. अब इमेजिन करो कि ये 150 में से सपोज 120 बाहर चले गए. 150 में से कितने चले गए बाहर? 120 बाहर चले गए. करेक्ट? राइट? उसके अगेंस्ट कितने K प्लस अंदर आएंगे? 3:2 रेशियो के हिसाब से बताओ बेटा. 120 के हिसाब से कितने K प्लस अंदर आएंगे? Tell me quickly, why so much of time? Simple सी चीज है इसमें. 3:2. 120 out. So how many in? How many K plus will move in? Come on. इतना डिफिकल्ट मैथ्स क्वेश्चन पूछा है मैंने. हाँ सिद्धिका, राइट. वेरी गुड. यस कृष्णा, यस अर्पिता, यस वैष्णवी. 80 अंदर आएंगे ना बेटा. 3:2 रेशियो मतलब. हाँ, सो 120 Na प्लस जब बाहर चले गए, हाँ, तो अब नेगेटिव चार्ज कितना हो गया यहाँ पर? 120 बाहर चले गए तो, या पहले 150 थे, 120 चले गए और 80 अंदर आए. मतलब डिफरेंस कितने का हुआ? 40 का डिफरेंस हुआ.
So instead of 1 minus 150, now it will become minus 190. हाँ या ना? हाँ. So they are saying that it is going to become more negative. Did you all understand why it is saying that though 2k plus enter inside the cell, okay, the inner surface becomes negatively charged. ये पॉइंट को पकड़ना है आपको. ये पॉइंट आपके कहीं भी बुक्स में मेंशन नहीं है. The question that when I was of your age, okay, when I was in 11th standard and when I was taught all these things, मेरे दिमाग में इतना कंफ्यूजन था कि भाई Na प्लस बाहर जा रहा है, चलो आई अग्री, बट K प्लस अंदर आ रहा है ना उसकी जगह पर, तो नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया? K plus is also positively charged ion. So how it will become negatively charged? तो सबसे पहले तो यही पता नहीं था कि negatively charged proteins होते हैं अंदर. That was the first point which I was not aware of that time. Second चीज ये थी कि चलो negatively charged protein है तो क्या हो गया? उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 2k प्लस अंदर आते रहेंगे ना. तो ये भी पता नहीं था कि इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहिए. Even that was not known to me that time. इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहिए. ओके जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा अपना स्टिमुलस आगे कैरी आउट होता जाएगा. yes got it. So that was the second thing. And third thing I always wondered कि भाई Na गया K आया, ये भी पता नहीं था कि 3 Na जाएंगे तो 2K आएंगे. एटलीस्ट उससे तो समझ में आ जाता है कि हाँ थोड़ा तो फिर पॉजिटिव कम हो रहा है, लेकिन नेगेटिव क्यों हो रहा है ये नहीं पता था. आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट मेकिंग भजिया फ्राई इन योर माइंड. जैसे मेरे माइंड में तब हुआ था व्हेन आई वाज ऑफ योर एज. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, 3 Na+ जब बाहर जाएंगे तो 2 K+ अंदर आएंगे, तो उतना नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगा. सो एक्सोप्लाज्म विल बिकम मोर नेगेटिव. ओके अंडरस्टूड. So that was, like, yeah, and during our times ना, it was not like I had studied my 12th on my own. हमारे टाइम पे ये ना ट्यूशंस क्लासेस ऐसा कुछ ट्रेंड ही नहीं था. There was no trend that time. So whatever we had to study, we had to go to the college. Our teachers used to teach us in the college, and rest of the things we used to sit in the library, refer to the reference books, make our own notes. तुम लोग को तो अभी रेडीमेड नोट्स मिलते हैं, हाँ. So we had to make our own notes, referring different reference books, and ultimately try to understand. When we used to go to ask any doubts, तो ऐसी bashing मिलती थी ना हमें. जब पढ़ाया तो ध्यान नहीं था. Why were you absent? How can you not understand such a simple thing? बाप रे बहुत टेंशन आता था हमें एक चीज भी अगर डाउट में पूछनी हो तो. So eventually I realized after reading so many, we did not have Google search. There was no Google बाबा. लाइब्रेरी जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स निकालो, 3-4 बुक्स में से समझ के अपने नोट्स बनाओ और फिर उस टॉपिक को लर्न करो. That was the way we had studied, but eventually, probably that was the best way to study. वो जो दिमाग में फिट हो गया ना, वो कुछ भी हो जाए वो निकलेगा नहीं. It's not momentary. It's like we have researched, we have read, and we have made. Okay, so yeah, it was a bit of difficult struggling life थी, I agree, but it was a foolproof method कि एक बार समझा तो समझा, हाँ, लेकिन नहीं समझा तो नहीं समझा, वो भी एक था इशू. So then like I always, my mama and my, मेरे घर के लोग always they tell me, they tease me, you're a born teacher. So what I used to do, जो मुझे समझा है ना बराबर से, I used to explain it to my friends from that time only. मैं मेरे फ्रेंड्स को सिखाती थी मतलब सिखाने के हिसाब से नहीं सिखाती थी रे. दे यूज्ड टू आस्क, अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव वाला क्या झमेला है, ये कैसे पॉसिबल है, Na+ बाहर है, K+ अंदर आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है. देन आई यूज्ड टू कोरिलेट व्हाटएवर आई हैड रिटन ऑन इन माय नोट्स एंड आई यूज्ड टू एक्सप्लेन कि देखो इसकी वजह से ये ऐसे ऐसे हो रहा है. देन दे यूज्ड टू लाइक हाँ यार सच में. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन ना, ऑटोमेटिकली मेरा रिवीजन हो रहा था.
मेरा खुद का रिविजन होता था when I have to explain this to others, and I used to feel happy कि मेरा रिविजन हो रहा है when I'm explaining, you know, some concepts to my friends. Yeah, portion was very vast. No need, बाबा वो टाइम पे नीट वेट कुछ नहीं था. It was purely based on your 12th standard board marks. PCMB के marks consider हुआ करते थे. Right? Yeah, you feel good and peaceful. I know. I generally do that only. ऑफलाइन क्लासेस, अरे आई अग्री. देखो अभी वापस ये ओमिक्रॉन का नया संकट मंडरा रहा है तुम्हारे ऊपर. अच्छा तुम लोग ने वैक्सीन को मतलब लिया कि नहीं? हैव यू टेकन द वैक्सीन्स? टेक इट इमीडिएटली. डोंट वेट. टेक इट बाबा. यू हैव टेकन भूमि, वेरी गुड, एक्सीलेंट. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, रजिस्टर्ड इन कॉलेज. अच्छा कॉलेज दे रहा है. अच्छा ध्रुव आज ले लिया, गुड बेटा, गुड. यू हैव टू टेक इट. बुखार क्या आया था? बुखार का क्या है? अरे बाबा कृष्णा टेक केयर. हाँ, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग टेक द वैक्सीन. मेरे से ज्यादा मेरे बेटे को ही बहुत जल्दी थी. बिफोर आई कुड टेल हिम, he already booked his slot, he did that whatever registration. मेरे पीछे लग के कल लेके भी आया. पढ़ाई से ब्रेक का बहाना मिल गया उसको, तो वही चाहिए. मेरे बेटे को तो वही चाहिए. So yesterday he wasted almost 2.5 hours waiting in the queue. But anyways, yeah, I know. Nowadays again there's a problem with, you know, this offline. Do we need to rest after vaccine? It's all psychological. Trust me, after taking the vaccine, before going to bed, take one Dolo. बुखार आए या नहीं आए, एक डोलो लेके सो जाना. सुबह उठने के बाद तुम्हें लगेगा भी नहीं कि तुमने वैक्सीन लिया है. एक डोलो ले लेना. डोलो ले लो, पैरासिटामोल ले लो, व्हाटएवर. आई मीन मेरे घर पे डोलो पड़ी रहती है, तो एक डोलो की वो पिल ले ली. कल रात को मैंने बेटे को दे दिया. ही इज फाइन. क्रोसिन avoid. Take paracetamol or Dolo. Dolo will stop the body ache also if it is going to happen. And don't wait. बुखार आएगा तो लेगा, ऐसा नहीं. हाँ, Vicrol is okay. Yeah. Vicrol is also fine. Ibugesic is fine. But better कोई तो एक पैरासिटामोल का टैबलेट लेने का और सो जाने का. फिर सुबह कुछ लगता ही नहीं है. You will not even realize. हाँ, थोड़ा सा heaviness होता है हाथ में because you take any vaccine रे. It's not COVID vaccine. You take any vaccine for 2 days, थोड़ा सा ये हाथ में थोड़ा heaviness रहेगा. Body ache because you did not take Dolo. Did you take any paracetamol or Dolo? Immediately ले लेने का शाम को, फिर कुछ नहीं होता है. और अगर बुखार होता भी है ना, that's fine. That means your antibody production has started very soon. You should be happy about it. नहीं, फिर नहीं होना चाहिए था. It should only one is enough. Now I gave my son one Dolo yesterday night. He took the vaccine yesterday evening. Yesterday night I gave him one Dolo. Today he's fine. I mean he's absolutely fine. He was full day. He had attended his lectures and whatever school sab kuch. After vaccine, yes. After vaccine take paracetamol. Yes. So that bukhar nahi aayega. Okay. But somehow even I had never faced this problem when I had taken my vaccines that time. मुझे कभी मतलब मुझे भी कुछ नहीं हुआ था. No, I mean in my house, so these people were, you know, that time there was a trend of, you know, that racket was going on that people are giving saline water. So no, not for all. I'm talking about this COVID-19 vaccine, beta. So मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना. There was no heaviness in my arm. There was no pain. I did not feel, you know, no symptoms at all. No fever, nothing. So everyone were teasing me कि तुझे vaccine नहीं, तुझे saline ही दिया है शायद. Yeah. Yes, Vaishnavi. That is the reason actually. You're right. Okay, what's your doubt, beta? You want me to explain the negative part? Already there are 300 proteins which are negatively charged present in the exoplasm. Okay,
To counteract that, there were 150 Na plus molecules present. Out of 150 Na plus, 120 went out. But for that 120 na, 80 K plus entered inside. Okay, तो अभी 150 की जगह पर सिर्फ 80 आ गए हैं, 30 ऑलरेडी है. So 120 के जगह पर 80 प्लस मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए हैं. 120 प्लस बाहर चले गए, 80 प्लस अंदर आ गए. मतलब कितने का डेफिसिट हो गया? इट्स अ डेफिसिट ऑफ 40. So already we had minus 150 charge inside. 300 में 150 वर plus sign, right? So we already had minus 150. And now because 120 went and 80 came inside, now minus 40. 40 का और deficit हो गया. So 150, 40. It made how much? Minus 190 का भी negativity आ गया. जो पहले 150 का negativity था, now it became 190 का negativity. Understood what has happened? Transport, yeah. Na plus because it is impermeable. Yes, Arpita, you're right, but yes, but got it now. All of you are okay with this concept? Yes, okay. So see, now we call this as polarized condition. Polarized का मतलब क्या है? More negativity. Resting membrane क्या था? There was resting membrane potential. So there was, like balancing हो गया था. अब जैसे ही स्टिमुलस आता है ना, जैसे स्टिमुलस आता है तो क्या होता है? ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये रिपल स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल. तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए Na प्लस K प्लस का मूवमेंट चलता रहता है. फाइन. सो दिस इज मेंटेनेंस. ये मेंटेनेंस हो रहा है. आफ्टर मेंटेनेंस क्या होगा देखो. सेकेंड इज एक्शन पोटेंशियल. अब आएगा मजा. अब क्या हो रहा है देखो. When a stimulus is applied, the membrane at site A becomes permeable to Na plus. अब देखो क्या हो गया. ये बहुत मस्त वाली चीज हुई है. ये देखो, as soon as stimulus is going to be applied, ये जो मेम्ब्रेन है अपनी, कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द axon जो है, it was still now not allowing Na plus to enter inside. It was only allowing the K plus to enter inside. Correct? जैसे ही stimulus आया, it allowed Na plus to come inside. भाई आजा, stimulus आया है, come in. So it became permeable to whom? It became permeable to Na plus. So when the stimulus is applied, the membrane at site A, ये site A है यहाँ का. This is going to be site A, this is site B, this is site C, this is site D, this is site E, and so on. Okay, so at site A क्या हो गया देखो, Na plus को अंदर आने के लिए entry मिल गई. Fine. So see, this causes rapid influx of sodium ions and reversal of polarity at that site. मतलब क्या हो गया? अब Na प्लस को अंदर आने को अलाउ करने के बाद क्या हो गया बेटा? पॉजिटिविटी बढ़ गई कि नहीं? पॉजिटिविटी बढ़ गई कि नहीं उधर की? Exactly. So now what has happened? This has caused rapid influx of Na plus and reversal of the polarity at that site. This particular thing. So outer negative and inner positive. Outer negative का मतलब क्या हो गया? Proteins बाहर नहीं गए हैं. Proteins have not moved outside, but Na plus ने जो positivity maintain की थी वो सारे अंदर आ गए, इसलिए outer area became negative. So even outer fluid was having Na plus and generally Cl minus. Okay, अब Na plus अंदर आने के बाद Cl minus बाहर ही रह गए, so that gave a negativity outside. So उल्टा हो गया अभी. So this is called as depolarization. Outer area, always there is going to be Na plus के साथ generally Cl minus. Okay, generally it could be any other also,
ओके वो कटायन आनायन जनरली एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं ना, वैसे होता है। तो Na+ बाहर था तो उसके साथ उसकी फ्रेंड हमेशा रहेगी, कौन? Cl-। अब Na+ अंदर आ गया, अब Cl- अकेली रहेगी बाहर। Okay, got it? So this is going to be called as depolarization. Now what will happen? See, now action potential मतलब ये actual stimulus apply होने के बाद क्या हो रहा है? Okay, the electrical potential difference during depolarization across the plasma membrane is called as action potential. So what is action potential? Electrical potential difference जो अभी कम हो चुका है, -150 था है ना, फिर वो -190 बन गया था, अब क्या हो गया? Na+ को अंदर आने के बाद वो -190 का अब कम हो गया है डिफरेंस. So this difference will be called as action potential. Did you all understand this thing very clearly? At only one particular point, not throughout the membrane. Look at this particular diagram, you will come to know. यहाँ पर अभी पॉजिटिव अंदर है, नेगेटिव बाहर है, इधर अभी भी सारे नेगेटिव ही अंदर है और पॉजिटिव ही बाहर है बेटा. सो ओनली एट ए पॉइंट ए जहां स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है, ओनली एट दिस पॉइंट देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इनसाइड एंड नेगेटिव आउटसाइड. ओके, यू वांट मी टू एक्सप्लेन द लास्ट स्लाइड? लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट, ओ माय गॉड, just wait, let me complete this. Okay, so here what has happened, see now this is your action potential. यहाँ पर देखो, तो सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड ओनली इन दिस जोन, नेगेटिव बाहर चला गया, पॉजिटिव अंदर आ गया, बाकी यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द स्टिमुलस इज गोइंग टू गेट अप्लाइड, अदरवाइज नॉट थ्रू आउट. समझ में आ गया? क्लियर? So Na+ from here also is going to be allowed to move inside. So Na+ पूरा का पूरा इसके अंदर घुस रहा है. Influx का मतलब है entry, efflux का मतलब है exit. So here there is influx of Na+. Till here understood everything? Anyone having any difficulty in understanding this? Come on, tell me. Understood? Action potential क्या होता है? What do you want me to explain? Last slide का last point. Potential difference. The electrical potential difference, that is the charges, negative and the positive charges. The difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. Potential means capacity. To keep it constant, that is called as resting potential. Okay? Got it? Yeah. The next is what, see? This one. Action potential, resting potential. दोनों का मतलब समझ में आया है आप लोग को? Anyone having any problem with understanding of this action potential? Can I move ahead? Okay, see now. Progression of action potential. अभी action potential तो trigger हो चुका है. अब ये progress कैसे होगा आगे? How will it proceed ahead? See. At sites ahead, that is side B. Now look at this particular point. Slide B देखो, ये side B देखो बेटा, this point. Okay. Outer surface is positive. Inner surface is negative. Okay. As a result, a current flows on the inner surface from side A to B. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो पॉजिटिव है ना, अब ये इधर से इधर मूव करेंगे. So the Na+ molecules which are now present at site A will not move outside, rather they will shift to the next position. Got this? क्या हुआ? तो Na+ के मॉलिक्यूल्स जो अभी अंदर आ चुके हैं ना बेटा, वो बाहर नहीं जाएंगे. They won't move out. Where will they move? They will move within the exoplasm. So they will shift from one position to another position. So A site पे जो Na+ molecules है, they will now move to site B. समझा? Propagation.
correct? So see, on the outer surface, the current flows from side B to A. अब positive एक साथ नहीं आ सकते, they will repel each other. So what is going to happen? As and when this positive will move here, this positive will enter again here at site A. समझा क्या हुआ? तो यहाँ पर अभी नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव इधर आ गया है. सो व्हाट हैज हैपेंड एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन? यहाँ पर पॉजिटिव आ गए, यहाँ के पॉजिटिव आगे चले गए. सो दिस इज नेगेटिव अगेन नाउ. ओके, सो दिस वाज योर Na+. बाहर नेगेटिव था, सो मैं ऐसे दिखा रही हूँ. ठीक है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, सी बेटा, नाउ दिस Na+ हैज मूव अहेड. करेक्ट? समझा? तो ये आगे चला गया. तो क्या होने वाला है? ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर का, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे चला गया. तो इधर का क्या होगा? नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो अगेन इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. शिफ्ट. अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग? यस, एग्जैक्टली. सो ये जो पॉइंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है बेटा. ए का अंदर का पॉजिटिव चार्ज विल मूव टू द बी का अंदर का साइड, एंड बी के बाहर का पॉजिटिव चार्ज विल मूव टू द ए का बाहर का साइड. ओके, गॉट इट? क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग, सी. सो ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड ए टू बी. सो यहां से पॉजिटिव चार्ज अभी इधर आ जाएगा. ओके, to complete the circuit. Hence, the polarity is reversed and the action potential is generated at side B. Now, side B पे positive आ गए, तो side B पे action potential पहुंच गया. Ripples जो start हो गई है A point से has now reached the B point. Correct? That is, action potential at site A now arrives at site B. Then that B will, move on to the next one, that will be at the C side. So B will again get the negative charge. तो ये जो है ना बेटा, ये चलता ही रहेगा ये सिलसिला. So look at this. इधर उन्होंने भाई बताने की कोशिश की है, आउट नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटसाइड द एक्सॉन पॉजिटिव, इनसाइड ऑफ द एक्सॉन नेगेटिव. ओके, जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होता है एट पी पोजीशन पे, स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो बाहर नेगेटिव हुआ, अंदर पॉजिटिव हुआ. करेक्ट? एज इट रीचेस, द इम्पल्स रीचेस एट Q, मींस नाउ द Na+, ये यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें Na+, राइट? सो द Na+ इज गोइंग टू नाउ मूव टू द Q पोजीशन. करेक्ट? Right? So what is going to happen over here? See, now Q has got negative, this is positive. So what will happen? See, K देखो, PQR है ये, PQR. R पे आते आते P has again become normal, positive negative आ गया. ये देखो, S में आते आते P and Q दोनों normal हो गए वापस. So Na+ is just moving ahead. From P position, Na+ is moving to the Q position. From Q position, it is moving to the R position. From R position, it is moving to the S position. करते करते करते, where will it end? It will end in the synaptic knobs. You remember the synaptic knobs? Axonites, axon terminals, synaptic knobs. वहां जाने के बाद ये Na+ उधर तक ट्रैवल करता रहेगा. तो कहां से स्टार्ट हुआ था? एक्सॉन के फर्स्ट पॉइंट ए से. कहां पर एंड होगा? वो साइनेप्टिक बल्ब्स, नॉब्स में जाके ये एंड होगा. धीरे धीरे आगे 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 बढ़ते 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 इट्स गोइंग टू रीच दी synaptic knobs. Did you all understand this particular thing very clearly, how this is being, moving ahead? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे कोई गड़बड़ नहीं करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अंदर के पॉजिटिव चार्जेस अंदर के अंदर ही आगे बढ़ेंगे और बाहर के पॉजिटिव चार्जेस जंप करके पहले वाले साइड पे आ जाएंगे. सो दे विल मूव बैकवर्ड, आउटसाइड वाला.
इनसाइड वाला दे विल मूव फॉरवर्ड. सो इनसाइड वाला ऐसे आगे जा रहा है, आउटसाइड वाला ऐसे पीछे आ रहा है. ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वेरी क्लियरली ऑफ द एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है? ऑल ऑफ यू, नो टेंशन. एनी पॉइंट नॉट अंडरस्टूड, प्लीज डू लेट मी नो. बताओ बताओ, कुछ नहीं समझाओ तो पूछो, प्लीज गो अहेड. Yes, Krishna. Right, beta. Correct. समझा कैसे प्रोपगेशन हो रहा है? So one train is moving from Borivali to Churchgate, other train is moving from Churchgate to Borivali. As simple as that. Okay. Well, then what happens next? The next thing that is going to happen is the sequence is repeated along the axon and the impulse is conducted. The rise in permeability of Na plus is extremely short-lived. It is quickly followed by the rise in permeability to K plus. That is the reason वो negative वाला part वापस से normal हो गया. Immediately K plus diffuses outside the membrane and restores the membrane resting potential. Okay, thus the fiber becomes ready for further stimulation. So at one time, एक स्टिमुलस लेने के तुरंत बाद दूसरा स्टिमुलस लेने के लिए अपना न्यूरॉन्स रेडी हो जाते हैं. दे कैन टेक मल्टीपल सिग्नल्स almost at the same time. I won't say simultaneously, but almost at the same time. Okay, so the same thing as they have said over here. Thus the fiber becomes ready for further stimulation. Did you all understand this nerve impulse propagation? What is resting membrane potential? What is action potential? What is propagation of the action potential? How the charges are moving and how it's happening? Any difficulty, beta? Anybody who has difficulty in understanding this particular part? Last point of previous slide. Immediately K plus diffuses outside the membrane. Why will the K plus move outside? Because Na plus has entered inside now. So it's going to be, you know, compensatory. Na plus 3 अंदर आ रहे हैं तो 2 K plus को बाहर जाना ही पड़ेगा, right? So here, when the Na plus, what are they saying? That the permeability to Na plus is extremely short-lived. Okay, means when it is coming inside only, that is the same time K plus is going to move out. Okay, so immediately K plus diffuses outside the membrane and restores the resting membrane because the charges have to be maintained. Charges maintain करने पड़ते हैं उसको. चार्जेस अगर मेंटेन नहीं किए तो पोटेंशियल डिफरेंस में गड़बड़ हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी. उन्होंने वैल्यू जो है ना बेटा वो मिली वोल्ट्स में दिया हुआ है. आई शो दैट स्लाइड नाउ, यू विल कम टू नो. या कैन यू सी दिस? Here K plus is 20 mm, Na plus is 450 mm. Look at the difference. Okay, now what is happening inside? K plus 400 mm and Na plus 50 mm. Okay, so in this way now these values have to be maintained. So for maintaining these values, the K plus has to move out when Na plus is trying to come in. ओके तो ये जो वैल्यूज है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज है, वो उनको मेंटेन करनी पड़ती है इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो टू अचीव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आइडियली ये वैल्यूज अचीव करना इनका बेसिक काम है. गॉट इट? राइट? ओके, फाइन. So that's all with the conduction of the nerve impulses. Okay, now let us see about the synaptic transmission of the impulse. कि अब ये साइनेप्टिक नॉब में ये Na प्लस गया, उसके बाद क्या होगा? What is next? What is next is something that we have to understand, which is called as synaptic transmission. So from one particular neuron, this impulse has to reach another neuron. तो दूसरे न्यूरॉन में
impulse generation करना है तो वो कैसे होता है, is something that we have to understand. So synapse is a functional junction between two neurons. It is of two types, electrical synapse and chemical synapse. Okay, so it's a junction. So imagine कर लो कि ये dendrites है, sorry, ये अपने synaptic knobs है और ये मेरे dendrites है ना. तो साइनैप्टिक नॉब में से ये इम्पल्स को अब ये डेंड्राइट्स तक पहुंचना है, so that the impulse will be then carried to this axon. Correct? Understood? So how is this going to happen? This is going to happen by two methods, by electrical way and by chemical way. So let us understand both electrical and chemical synapses. Okay. So what is electrical synapse? First, in this, the membrane of pre and post synaptic neurons are in close proximity. इसका मतलब क्या हो गया? What do you mean by this? That this synaptic knobs and this dendrites are in very close proximity. Means they are very close to each other. बहुत ही ज़्यादा close है. Okay. Impulse transmission is faster than in chemical synapse. Electrical synapses are rare in human system. Human beings में electrical synapses almost negligible है, generally नहीं होते हैं. Okay, तो यहाँ पर हमारे में जो होते हैं वो chemical synapses होते हैं. Human beings are going to have chemical synapse. It's very rare in humans. The major reason is इतनी close proximity में पहले तो neurons होते ही नहीं है अपने. Okay, they are surrounded by the neuroglial cells, as I always say. So वो gap जो है वो इतनी close नहीं होगी, और अगर उन दोनों को हमने close लाने की कोशिश की ना तो हमें current लगता है. You know current लगना क्या होता है? What do you mean by current लगना? Open wire को कभी touch किया है क्या? हाँ, have you all? छोटा सा हल्का सा शॉक लगा है क्या कभी? शॉक लगता है? Exactly, beta. That is actually, you know, that is the way that is an impulse so heavy in, a transmission that it actually, brings the two neurons very close to each other. और उनको फिर है ना आने के बाद separation कराने के लिए भी time नहीं लगता है. Then it's very difficult. Big one, अरे बाबा take care. हाँ, yeah, please take care. I'm very scared of that इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड ऑल. मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा. आई मीन हमें उसका नॉलेज नहीं है ना. जिसको नॉलेज है उसको कोई फर्क नहीं. लोग कहते हैं इलेक्ट्रिशियंस वो तो बिंदास खोल के ये करके वो करके उनका कुछ ना कुछ चालू रहता है. एंड आई तो लाइक आई एम सो स्केयर्ड ऑफ टचिंग दैट बटन आल्सो विथ माय वेट हैंड्स. मस्कीटो बैट से लगता है शॉक, आई नो. वो हम लोग उसको प्रेस करते हैं एंड उसको अगर बाय मिस्टेक टच कर दिया तो yes, you get that shock. So electrical impulses are very rare in human beings. Okay, the main reason is the two neurons are not in very close proximity, and if you try to bring them together, it's going to be it's painful. Okay. Special reasons why other animals have electrical synapses, it depends on the distance between the neurons basically. Okay, and then there is a chance that the neurons may get damaged also. So we cannot afford, our system cannot afford to damage the neuron just because of the impulses. So we don't mind wait and go ahead with the chemical impulses. Everywhere this impulses are, of course, where are they present means they are going to be in the neuron wala area. Where are the neurons present? Of course in the brain. Correct? Electrical neurons नहीं होते, electrical impulses होते हैं. Electrical synapse होता है. Synapse is a junction where there will be transmission of one impulse from one particular synaptic knob to the dendrites of the other neuron. Okay. Let us see now what happens in the chemical impulse. Okay. Chemical impulse, this is how it actually takes place.
That is, in this there is a fluid filled space called as the synaptic cleft, okay, between the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron. The presynaptic regions have swellings called as synaptic knobs. We already know where the synaptic knobs are present, जिसको हम buttons भी कहते हैं. They contain synaptic vesicles. So these synaptic knobs will contain vesicles. Vesicles are what? छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज जो क्या कैरी करेंगे इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, सो these synaptic vesicles are filled with neurotransmitters, that is either acetylcholine या फिर adrenaline. These are the two. Either it will contain acetylcholine or adrenaline. Okay, now look over here, beta. This is going to be the knob. Okay, this knob will contain this synaptic vesicles. Correct, right? Now what is happening? See, इसको उन्होंने enlarge किया है, ये दो points को उन्होंने enlarge किया है, यहाँ पर तुम देख सकते हो. Okay, so here the synaptic vesicles are fusing. So these white color ones are fusing over here. Correct? So they are fusing. Neurotransmitter is released here. This is your presynaptic membrane, ऊपर वाला covering. और ये नीचे वाला is the postsynaptic membrane. तो जो dendrites है ना उसका area. So see, ultimately what has happened? The neurotransmitter has been released and it has entered into the dendrite. So this is the synaptic cleft. Okay, ions flow through the polysynaptic channels. This is the postsynaptic region. Here, they'll enter inside to reach the cyton of the next neuron. And in this way, it is going to again get carried forward. ठीक है, कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये सिलसिला एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कब तक चलता रहेगा? Till they don't reach the main center in the brain or the spinal cord. तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा. So in the next lecture, I'll be teaching you all the parts of the brain in which you will see there is auditory area, then there is visual area, then there is speech area, Waring's area, Broca area. ये सारे के सारे areas है, तो उधर तक पहुंचाने का काम करेंगे ये. So they are actually like postmen. Okay, and they are going to carry this particular pre and post. Yes, till they reach their master area. ये चलता ही रहेगा. Neurotransmitter is present pre or post. Neurotransmitter is going to be present in the presynaptic knob, which will be then transported into the cleft, which will then enter into the post. Okay, so pre के synaptic knob में से neurotransmitter release होगा उस gap में जिसको हम कहेंगे synaptic cleft, and finally it will enter into the post neuron in the dendrite region. Understood this? Yeah, correct? Yes, but fine. Okay, so in this way this transmission is going to take place. कहाँ तक जाएगा? मैंने क्या बोला? कहाँ तक ये जाएगा? अब मैं कुछ बोल रही हूँ, right? I'm talking, you all are listening. So whatever words are being heard by you needs to be analyzed by your brain if you pay attention. If you pay attention, it's a very big, I mean in the brackets and the bolds. If you pay attention. नहीं तो I know there are so many students. लॉग इन किया, कैमरा तुम्हारा बंद है, घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरे टैब अपने इसके ऊपर विंडो ओपन करके गेम खेल रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, पता नहीं फलाना कर रहे, फलाना कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे. ऐसे लोगों के लिए ये कुछ नहीं है. हाँ, so you have to be mentally and physically present, as I always say. Yes, and I have written this in bold also. So those who are mentally and physically present, what are you trying to do? My words are reaching you all. Okay, those words
are being carried as sound waves, right, to reach the auditory area of your brain, where each and every word will be analyzed for अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. बट इट इज सो फास्ट कि मैं इतने फास्ट बोल रही हूँ, तुम लोग इतने फास्ट उसको एनालाइज कर रहे हो. मतलब तुम्हारा ऑडिटरी एरिया, सेंसरी एरिया कितना शार्प है. देखो मैं कहाँ, आप लोग कहाँ, फिर भी ये पॉसिबल हो रहा है. राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वे. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा, दैट ये कब तक, कहाँ तक ये साइनैप्स चलता रहेगा, जब तक वो ऑडिटरी कैनाल के ऑडिटरी मीटर से लेकर ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक. तुम मुझे देख रहे हो, यू कैन सी मी, यू कैन सी द स्लाइड. सो जब तक तुम देख पा रहे हो मुझे, मतलब क्या, दैट इमेज विच इज सेंस्ड बाय योर eyes will reach the retina, which will carry the impulse, the stimulus of the vision of the picture to the brain via these neurons in the optical region, where that picture will be analyzed, which will make you to see me or see the slide. कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है देखो. Yeah, we all are machines. We all are machines, Vaishnavi. You're very right, beta. But we are so quick at it. मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. जब ये मैं बता रही हूँ तो तुम इमेजिन करते करते तुम्हें लगेगा बाप रे ये सब के लिए कितना टाइम लगेगा. अरे हार्डली, not even a second. Why that? If I tell you to close your eyes and make you all think, like I tell you, don't think of an elephant. I'm saying don't think of an elephant, but your mind has already analyzed the word elephant and already made an image of the elephant in your mind. हाँ या ना बोलो. So not only actual seeing, just thinking also creates things. Correct? तुम लोग अभी तक डॉक्टर बने नहीं हो, है ना. जिनको डॉक्टर बनना है, if I tell you, if you get demotivated, होता है demotivation होना. सिंपल सी चीज है. कभी कभी बहुत बोर होता है, यू गेट वेरी डिमोटिवेटेड कि यार नहीं यार अभी बहुत हो गया ना, आई डोंट वांट टू स्टडी. एक टाइम आता है, हर एक के लाइफ में आता है. ये मत बोलो हमारे लाइफ में रोज आता है, प्लीज. कुछ भरोसा नहीं है भाई तुम लोग का. तो अगर ऐसा टाइम आता है ना कि यू गेट डिमोटिवेटेड, आई ऑलवेज से दैट ओनली इमेजिन योरसेल्फ wearing that white color का डॉक्टर्स कोट, taking a stethoscope in your neck region. ओके घुमाते घुमाते पूरे मेडिकल के आपके पूरे कॉलेज में घूम रहे हो, हॉस्पिटल में घूम रहे हो, शाइनिंग मार रहे हो, हाँ, टू बी डॉक्टर्स करके नाम से. इमेजिन कर लो, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी चली जाती है माइंड की. सो जस्ट थिंकिंग, यू इमेजिन योरसेल्फ ना, यू कैन इमेजिन राइट नाउ आल्सो व्हेन आई एम सेइंग यू कैन इमेजिन दिस, राइट. आजू बाजू में पेशेंट्स है, हाँ, तुम एकदम मस्त जा रहे हो एकदम, हाँ, कैसे फील आता है, वो फील गुड वाला फीलिंग आता है कि नहीं, कि यस यार जो मुझे बनना है. हाँ, तो वो बनने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है. तो वो पढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, ये लेजीनेस को हटाना है. तो ऑटोमेटिकली गेट मोटिवेटेड. बिलीव मी, दिस इज द वे यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ. पेशेंट्स आर कॉफिंग, यू कांट हेल्प बाबा. वंस यू आर अ डॉक्टर, पेशेंट कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, you have to accept that you are a doctor now, and you have to accept that you have to serve people like this only, right? The toughest job is of trauma doctors. I mean the doctors who make a career in trauma, जो accident cases को treat करने वाले doctors होते हैं ना, trauma doctors, hats off to them. I mean ये normal सर्दी है, बुखार है, ये है, वो तो सब चीजें ठीक है. ट्रॉमा कंडीशन के जो पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीट करना, यस, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दैट इज लाइक सीरियसली इट्स हैट्स ऑफ टू दोस डॉक्टर्स, नो डाउट. फॉर ऑल डॉक्टर्स आई ऑलवेज अप्रिशिएट, नो डाउट. बट yes, all doctors, as I say, all doctors, right? So imagine yourself sitting in those shoes. Yes, exactly, that's what, man. So those doctors have like
इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं वो, राइट? You will come to know beta once you study ahead. Okay, but it has to be analyzed. See, I'm talking about the analysis. कितना quick mind होना चाहिए वो टाइम पे कि कैसे ट्रीट करना है ये बंदे को, है ना? Right? Yes. So this is how the things are happening. This is called as your chemical synapse, जो हमारे में regularly चलता रहता है. 24/7 बोलूं तो भी चलेगा. When you are sleeping also, generally you are in your deep thoughts. Even at the time of sleeping, तुम लोग कुछ ना कुछ सोचते सोचते ही सो जाते हो, है या नहीं? Yeah, I know. अब जो genuinely पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे कल कौन से लेक्चर्स हैं, है ना? जिनको टाइम पास करना है वो क्या सोचेंगे, जाने दो कल का सुबह का लेक्चर कौन अटेंड करेगा, सो जाते हैं, 10-11 बजे उठेंगे, थोड़ा सा क्रिकेट खेलने जाएंगे, फुटबॉल खेलने जाएंगे, थोड़ा सा गेम्स खेलेंगे, फिर देखेंगे आफ्टरनून का लेक्चर का क्या ही है, लॉग इन कर लेंगे, बात के बाद में बात. ये भी सोच रहे हो तुम लोग. यू आर आल्सो थिंकिंग. दिस इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ओनली, राइट? एवरीथिंग इज केमिकल साइनैप्स. Each and every act that I said till now is a chemical synapse. This is how it happens. Okay, so see what is happening. Impulse reaches the axon terminal. देखो ये बहुत precisely देने की कोशिश की है मैंने, बहुत precisely. See, impulse reaches the axon terminal. मतलब ये pre-synaptic neuron की बात हो रही है, correct? Synaptic vesicle binds to the plasma membrane of its own. Correct? Release of the neurotransmitter into the cleft, synaptic cleft. It diffuses across the synaptic cleft. It combines with the receptors on the postsynaptic membrane, that is the dendrites wala part. Okay. Opening of the ion channels, allowing entry of this Na plus into the dendrites, generates the next action potential. The action potential may be excitatory or inhibitory. दोनों होते हैं बेटा, not necessarily always excitatory. Inhibitory भी होता है या नहीं? What do you mean by inhibitory action potential? Calm down. बहुत गुस्सा आया है तुम्हें, शांत हो जाओ. Inhibitory. बहुत भूख लगी थी, फटाफट 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 खा लिया, अब inhibit. Right? So both types of action potentials can be generated. Any difficulty in understanding these points, my dears? Anyone who has not understood any part of this, please tell me. ये वाला जो है ये बहुत क्रूशियल है, ये वाला साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स का ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वो क्लियर? Good. So this is what is about the synaptic transmission. The next is going to be the human neural system, which will include your brain and spinal cord. What we have studied till now is the neuron. How is it structural and functional unit? वो हमने देखा. Now we have to move to the organs. That is what are the organs? Brain and spinal cord along with the nerves. Correct? तो ये हमें देखना है डिटेल में, जो मैं आज नहीं स्टार्ट कर रही हूँ. मुझे पता है अभी अगर मैंने स्टार्ट किया तो जो कुछ तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल हुआ है ना, उसका प्रोग्रेशन होके बाहर निकल जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए. तुम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थे, मैंने एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट कर लिया, अब उसका प्रोपोगेशन हो रहा है तुम्हारे माइंड में, अच्छी बात है. और ज्यादा पढ़ाऊंगी तो वो प्रोपोगेशन होके दिमाग के बाहर तुम्हारे Na+ और K+ बाहर ना आ जाए, है ना? So I won't start with the human neural system today. I'll go ahead with that in the next class with the brain in detail. Okay, but my dears, this chapter is very, very, very important. हाँ, exactly. Yes, yes, beta. Yes, Kinjal. Yes. Yeah. Yes, Jaya. Yes. What is lipolysis and proteolysis? Lipolysis is breakdown of lipids. Proteolysis is breakdown of proteins. ठीक है?
What is lipo and proteo? Okay. I've already told. मैंने already बताया था हिरिशा. I think digestion. मैंने बताया था already. Okay. चलो bye बेटा. Okay. In the next class, we'll go ahead with understanding the brain. Huh? What's your doubt? In excretion module, many questions are about some ornithologist cycle. Do we have to know that? No, no, not required. Not required. Not required. Okay. I need to check, but I haven't checked. Rest of it I need to check. I'll see. No issues, no issues, no issues, no issues. That's fine. That's fine. Okay. Sure, sure. Bye, bye, bye. Bye, beta. See you all.